Assalamu alaikum students, कैसे हैं आप? I do hope that all of you will be having a very good time of your life and chilling a lot. I'm your instructor Muzaffar Saeed, and today we shall be discussing another important question of logical reasoning, that is regarding logical deductions. Now this is a thing you have not seen or you have not done so much in your life, but it is the most interesting topic you will see in logical reasoning. Following different patterns and playing with different scenarios is really an enjoyable thing to do. So let's go to the light board and start our lecture. Let's students, we are at the light board, and today, as I've just told you in the intro, we are going to do a very interesting thing, and that is the questions regarding logical deductions. Now this is, for me personally, this is the most interesting part of this subject. होता क्या है इसमें कि एक सर्टेन सिनेरियो आपको दे दिया जाता है, एक सर्टेन सिचुएशन आपको दे दी जाती है, एंड देन यू आर गिवन अ सेट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जहां आपको बताया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि विच कॉम्बिनेशन एक्चुअली सूट्स और फिट्स द बेस्ट. और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ जब आप प्ले करते हैं, व्हेन यू ट्विस्ट देम अराउंड, तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. एग्जाम्पल हम करते हैं, ऑलरेडी हम इसमें कर चुके. उसी एग्जाम्पल के कुछ डिफरेंट सिनारियोज अब हम डिस्कस करेंगे. कुछ पहले वाले सिनारियो भी रिवीजन के लिए देखेंगे और कुछ और डिफरेंट सिनारियोज भी हम देखेंगे. बट एक चीज़ याद रखें, हाउ टू अप्रोच दीज थिंग्स, ये पहले करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. नंबर वन, जब आपको कोई भी सिचुएशन दी जाएगी तो there will be two different types of conditions. दो तरह की कंडीशंस जो है वो आपको दे दी जाएंगी. आपके लिए आसान तरीन तरीका क्या है? आसान तरीन तरीका इनको करने का ये है कि स्टार्ट विद द बेसिक और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस. बेसिक जो कंडीशन होगी या बेसिक इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनको आपने सबसे पहले देखना है. इट कैन वर्क, मैं लिख ही देता हूं आपके लिए कि इट कैन वर्क एज अ starting point and the solution of a question. जब आप अपनी बेसिक इंस्ट्रक्शंस को, जो आपकी बेसिक कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल कर लेंगे तो आपके लिए बाकी की कंडीशंस को मैनेज करना वो कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा. एक एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूँ, and then we will discuss different scenarios about that particular question. हम इसको अपनी इनिशियल एग्जांपल में भी कर चुके, बट अब हम उसके डिफरेंट सिनारियोज डिस्कस करेंगे. एक आध सिनारियो रिवीजन के लिए वहाँ से भी आपको कॉपी करवाऊँगा, बट प्राइमरीली हम क्वेश्चन सेम रहेगा, बट वी शैल बी डिस्कसिंग डिफरेंट सिनारियोज ऑफ द सेम क्वेश्चन, सो दैट यू मे गेट कि एक ही तरह के क्वेश्चन को डिफरेंट हवालों से कैसे डिस्कस किया जा सकता है, एंड हाउ द सेम क्वेश्चन कैन हैव सो मेनी डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन वन क्या था जी हमारा, कि 6 inverted
cups are laid on a table each cup has a solid colored painted ball under it. The color of the balls are green, yellow, red, magenta, purple, and orange. The cups 1 to 6 are arranged in such a way that conforms to the following कंडीशंस. अभी मैंने आपको बता दिया कि कुछ कंडीशंस आपको दे दी जाएंगी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही आपने वो सारा अरेंजमेंट, वो सारी कि सारा जो सोल्यूशन है वो आपने प्रेजेंट करना होगा. नाउ वो कंडीशंस कौन सी हैं जी? The green ball must be under cup 5. Red and magenta balls must be placed under adjacent cups. And the third one is purple ball must be under a lower numbered cup than orange ball. So ये तीन conditions हमने fulfill करनी है. The green ball must be under cup 5, that is the first condition. Then secondly, red and magenta balls must be placed under adjacent cups, and then purple ball must be under a lower numbered cup than the orange ball. So questions देखते हैं कि questions हमें कैसे पूछे जाएंगे. The number one is what can be the possible arrangements
of balls. अब ऑप्शन अल्फा देखें, green, yellow, magenta, red, orange, and then purple. Beta is magenta, green, purple, red, magenta, and orange. Charlie is magenta, red, purple, yellow, green, and orange. Then we have delta, orange, yellow, red, magenta, green, and finally we have purple. And finally the eta option is red, purple, magenta, yellow, green, and orange. Now considering this question, you can easily check. कैसे चेक करना, ये मल्टीपल, ये ऑप्शन आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज इट कैन हेल्प यू आउट इन कंसिडरिंग सो मेनी डिफरेंट सिनारियोज. आपने करना क्या है, यू कैन चेक डिफरेंट सिनारियोज. फॉर एग्जांपल पहली हमारी कंडीशन क्या थी, दैट द ग्रीन बॉल मस्ट बी अंडर कप 5. नाउ हियर वी हैव ऑरेंज at number 5. So option A is cancelled. Same is the case with B. We have magenta at number 5. So this option is cancelled. अब apparently आपको ये बड़ा confusing लगता है, but I am telling you that do not be horrified, do not be terrified by seeing so many different things. कोई मसला नहीं है इसमें, सिर्फ presence of mind use करेंगे तो you will do it. Then let's come to option C. Green is at number 5, so this option is checked. Second, red and magenta balls must be placed adjacent. Yes, red and magenta, they are placed adjacent to each other. So ये option भी क्या हुई, click होगी. And then the purple ball must be under a lower number cup. Now purple is at number 3 and orange is at number 6. So we can easily conclude that option C is our correct option. फिर भी हम बाकी options को देखते हैं. Let's see exclude कैसे करने. अब यहाँ पर green तो है, बिल्कुल है, at number 5 ही है, but here the purple ball is at the highest number. तो पर्पल बॉल को तो क्या होना चाहिए था, इट मस्ट हैव बीन अंडर अ लोअर नंबर कप देन ऑरेंज बॉल. तो ये ऑप्शन भी क्या हुई, क्रॉस हो गई. ऑल्दो वी हैड टू ऑप्शंस दैट वर कंसिडर्ड करेक्ट बिकॉज रेड और मैजेंटा भी साथ साथ थी
एंड पर्पल ग्रीन भी जो थी वो इट वाज एट नंबर 5, बट पर्पल वाज नॉट अंडर अ लोअर नंबर कप देन ऑरेंज बॉल, सो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ग्रीन इज एट नंबर 5, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। पर्पल इज अंडर अ लोअर नंबर कप देन ऑरेंज बॉल, तो ये ऑप्शन भी क्या हुई करेक्ट। बट रेड एंड मैजेंटा they are not placed under the adjacent cups, so इस वजह से हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी exclude कर देंगे। So this is how actually you do these questions. Do not be terrified by so many different combinations. If you simply apply the basic techniques, you will get your answer. अब इसी के कुछ और सिनेरियोज हम डिस्कस करते हैं, ये ऐसे ही लिखा रहेगा और सिनेरियोज हम बाकी दोनों साइड्स पे हम इसको डिस्कस करते हैं, बट लेट मी इरेज द बोर्ड फर्स्ट। Now students, let's work some more examples regarding the same question. Question number 2 is, ball of which color can be placed under cup 6, and the options we have are green, magenta, purple, red and येलो। अब हमने जो पहले सिनारियो डिस्कस किया था उसमें आपको याद है कि हम लास्ट पे किसको लेके जा रहे थे, ऑरेंज पे, बट कैन इट बी द ओनली अरेंजमेंट, और कोई अरेंजमेंट हो सकता है, लेट्स सी। अब अंडर कप 6 वी ऑल नो 6 इज द हाईएस्ट नंबर, and be careful about these conditions as well. So अब होगा क्या, can we place green under cup 6? Obviously no, because the green ball must be under cup 5, so ये तो होना बिल्कुल ही possible नहीं है। Then can we place magenta? No, magenta cannot be placed because magenta के फिर साथ हम क्या लगाएंगे, उसके एडजेसेंट कप पे क्या आना चाहिए था, इट मस्ट बी रेड बॉल, एंड रेड बॉल कैन नॉट बी प्लेस्ड विद इट बिकॉज इसके जो एडजेसेंट होगा दैट कैन ओनली बी 5, एंड वी ऑलरेडी हैव ग्रीन बॉल अंडर कप 5। एग्जाम्पल लिख भी देता हूँ, इधर देखें 1 2 3 4 5 एंड देन वी हैव 6। यहाँ पर ग्रीन बॉल क्या है, इट इज़ अ परमानेंट थिंग टू बी, ये यही रहनी है, इसके अलावा और कोई चीज़ हिल सकती है, ये कोई बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। नाउ इफ वी प्लेस मैजेंटा बॉल, फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, इफ वी प्लेस मैजेंटा बॉल हियर, देन उसके एडजेसेंट तो क्या बचेगा, सिर्फ 5, और उसके एडजेसेंट वी नो कि क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी रेड, एंड सिंस वी कैन नॉट प्लेस इट एडजेसेंट टू magenta, then obviously magenta भी 6 पे नहीं आएगी। Purple, it cannot be the case because purple ball must be placed under a lower number cup than orange ball, तो purple भी obviously नहीं आ सकेगी because 6 is the highest number, तो वो lower number पे कैसे आएगी। Red, for the same reason we rejected magenta, red को भी हम क्या करेंगे, we shall reject because if we place red here, number 6, then we cannot place magenta ball adjacent to it. So our right option in this MCQ will be option eta, that is yellow. आपने देखा कि कोई मुश्किल नहीं है,
आपको बार बार उसकी वो पोजिशनिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू सिंपली अप्लाई द लॉजिक्स, इफ़ यू सिंपली अप्लाई द कंडीशंस टू डिफरेंट ऑप्शंस, यू कैन गेट द आंसर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. Let's see another scenario and check how we can make different combinations from the same question. If the purple ball is placed under cup 4, orange ball can only be placed at alpha, beta, Charlie, delta and eta 2, 3, 4, 5 and then we have 6. Now you know that we need to place purple ball under a lowered number cup than orange ball. So अगर वो 4 पे है तो 2, 3, 4 they are automatically excluded because they are not the higher number than 4. तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गए. Now talk about 5 and 6. 5 can be used but we know 5 is already occupied by the green ball. So 5 भी नहीं हो सकता. The only option we can choose is option eta because 6 पे रखेंगे तो फिर ही आपकी बाकी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होंगी. और इससे पहले हम देख भी चुके, जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें देखा था कि ऑरेंज वाज एट नंबर 6. सो वहाँ पे इसको रखेंगे और तभी हमारी सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो सकेंगी. लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल रिगार्डिंग दिस सेम सिनेरियो. Which of the following options must hold true? इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसको हर सूरत में ठीक होगी तो तभी ये सारे सिनेरियोज फिट इन होंगे. अब याद रखें, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेसेसरी एक्शन और नेसेसरी कंडीशन. ये ऐसी कंडीशन है जिसके बगैर आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती. दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक नेसेसरी कंडीशन होती है और एक ऑप्शनल होती है. तो ये नेसेसरी नहीं है, ये ये ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन है in which it has to be true in order to fulfill all these requirements. अगर ये इसमें ये नहीं होगा कि इसको चेंज भी कर लें तो मामला चल जाएगा. जैसे हमने यहाँ किया था ना कि येलो को हमने स्विच किया, 6 पे भी स्विच कर लिया और इधर येलो को 6 पे स्विच किया था और यहाँ ऑरेंज को स्विच कर लिया. तो दोनों सूरतों में हमारी कंडीशंस क्या हो रही थी, वो फुलफिल हो रही थी. जैसे यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, रेड, मैजेंटा और येलो, पर्पल, ऑरेंज, ये हमने कर लिया. दूसरा हम ये सिनेरियो भी कर सकते हैं कि रेड, मैजेंटा और ऑरेंज को हम क्या लें, यहाँ पर्पल इधर आ जाए और येलो इधर चला जाए. So yellow at 6 is an optional thing, but here we are not talking about optional thing. We are talking about a thing that has to be fulfilled. हर सूरत में उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं उसकी. So वो देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं. Alpha is the green ball is under a lowered number cup than
yellow ball. Beta is the orange ball is under a lowered numbered cup than green ball. Charlie, the purple ball must be under a lower numbered cup than green ball. Delta, the purple ball is under a lowered number cup than red ball. एंड ईटा, मैं स्पेस की कमी की वजह से लिख रहा हूँ इसको, रेड बॉल इज अंडर मैजेंटा. सो इट इज अंडरस्टूड. ऊपर वाली स्टेटमेंट ही चल रही है. नाउ रिमेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेसेसरी कंडीशन कि जिसको अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो ऑप्शन ही नहीं बनेंगे, गलत हो जाएगी, ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं होंगी. Let's talk about the first one. The green ball is under a lowered numbered cup than yellow ball. तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है. यहाँ ग्रीन बॉल येलो से क्या है, लोअर नंबर पे है. बट हमने किया था कि सपोज अगर हम ऑरेंज को ले जाएं इधर और येलो को ले आए इधर, तो इट इज ओके. So it is not a compulsion. We have been asked that something that must hold true. उसके बगैर बात ही ना बने. So it can be true, but it is not a must. ये prerequisite नहीं है. Then let's talk about the orange ball is under a lowered number cup than green ball. We have also witnessed. यहाँ orange ball थी, तब भी सही था. Orange ball green ball से ऊपर चली गई, तो तब भी क्या था, बिल्कुल करेक्ट था. सो यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है. इट कैन बी अंडर अ लोअर नंबर कप देन ग्रीन बॉल और इट कैन नॉट बी. दोनों ही सूरतें हो सकती हैं. लेट्स टॉक अबाउट डी फर्स्ट. पहले हम डी को देख लेते हैं. द पर्पल बॉल इज अंडर अ लोअर नंबर कप देन द रेड बॉल. जरूरी नहीं है, अगर पर्पल को हम यहाँ ले जाएं, ये वाला पर्पल उठा के इसको हम प्लेस कर दें यहाँ और इसकी जगह मैं कर दूं रेड, तो तब भी ठीक है. इट मीन्स कि दिस कैन ऑल्सो हैपन, बट इट इज नॉट अ कंपल्शन. देखिए ना, यहाँ वो कह रहे हैं ना, द पर्पल बॉल इज अंडर अ लोअर नंबर कप देन रेड बॉल. तो अब ये नहीं है, पर्पल बॉल इज अंडर रेड बॉल, लेकिन जब ये यहाँ थी तो फिर ये कंडीशन वायलेट हो रही थी. बट ये जो हमारी बेसिक कंडीशंस थी, ये हमारी क्या हो रही थी, फुलफिल हो रही थी. सो इट इज एन ऑप्शन बट नॉट अ कंपल्शन. एंड देन रेड बॉल इज अंडर मैजेंटा बॉल. ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. देखिए यहाँ पर पहले रेड मैजेंटा बॉल से लोअर नंबर पे था, यहाँ पर रेड बॉल क्या है, मैजेंटा से हायर नंबर पे है.
So it is again an option. The only thing which must hold true is option C. Why? The purple ball must be under a lower number cup than the green ball. इस green से इसको क्या होना चाहिए? Green is at number 5. इसको क्या होना चाहिए? इससे कहीं कम ही होना चाहिए. Because if it moves greater than, or if it moves to number 6, हमारी ये जो condition है, ये वाली थर्ड वाली, purple ball must be under a lower number cup than the orange ball, this condition will be violated. So we can safely say that option C is the only option that must hold true in order to satisfy all these conditions. So यहाँ जो ये जो करवाने का purpose था आपको, मकसद ये था to tell you what is the difference between an optional condition and a necessary condition. अब optional condition ये चारों ही हैं, A, B, C, D. Arrangements आपसे पूछे जाए तो all four can be the possible arrangements of the cups. But necessary arrangement क्या है? That is only option C. क्योंकि इसको अगर हम नहीं करेंगे, we are gone, done and dusted. फिर ये तीनों statements जो हैं वो कभी भी true prove नहीं हो सकेंगी, या confirming these statements will not be possible for us. So hopefully इसी एक क्वेश्चन के डिफरेंट सिनेरियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं एक और डिफरेंट सिनेरियो पे और देखते हैं कि वहाँ हमारे लिए क्या मौजूद है. Students, we are having another scenario for us and then we shall discuss the questions related to that scenario. पहले आपके लिए सिनेरियो लिख देता हूँ. That is our question number 2. The manager of a commercial printing firm has 6 printing jobs, i.e. P, Q, S, T, W and X. For a particular week starting from Monday to Saturday. Each job can be completed in one day. Only one job can be scheduled for each day. The jobs must be scheduled as per following conditions. So ये हमारे पास सिनेरियो है कि 6 जॉब्स हैं और इसके लिए हमारे पास 6 ही दिन है
और एक जॉब को कंप्लीट होने के लिए एग्जैक्टली एक दिन चाहिए और एक दिन में सिर्फ एक ही जॉब हो सकती है, 2 जॉब्स आप असाइन नहीं कर सकते। सो उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि करेक्ट कंडीशंस हमारे पास बेसिकली इसके टू फॉर फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया हमारे पास पहले देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं। कंडीशन 1 इज P must be printed before S is printed. So this is the first condition. The second condition is T must be printed immediately before or after the day on which X is printed. And thirdly, W must be printed on Thursday. So these are the 3 conditions जिसमें हमें फुलफिल करना है और इनको देखते हुए हमें अरेंज करनी है ये 6 जॉब्स। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Which of the following can be an acceptable schedule for the week? यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, और नीचे आपके पास ऑप्शन सब A, B, C, D लिखता चला जा रहा हूँ। P, Q, T, W, X and then S. The beta option is P, W, S, X, T and then finally Q. Charlie is Q, X, T, W, S, P. Delta is T, X, P, W, Q, S. And finally, delta and eta is X, P, T, W, S, Q. Now let's check this out कि इसमें से हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहली बेसिक कंडीशन हमारी क्या थी? दैट वाज ऑब्वियसली दैट W मस्ट बी प्रिंटेड ऑन थर्सडे। अब इस कंडीशन को जब आप देखते हैं तो ऑप्शन बीटा क्रॉस आउट हो जाती है बिकॉज हेयर वी आर प्रिंटिंग X, सो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया।
The next one was T must be printed immediately before or after the day on which X is printed. So T और X को क्या होना चाहिए? They must be printed on adjacent days. अब आप ये क्वेश्चन आ सकता है, you may think that it could have been easily written like that T and X should be printed on adjacent days, but the problem is we want to confuse you, and that is why in logical reasoning questions are asked in a lengthy and in a tiresome manner so that you may get confused very easily. So T and X must be printed on adjacent days. Let's see about the remaining options. Here T and X are not printed on adjacent days, so option alpha is also crossed. Option eta, if we talk about X and T, here too they are not printed on adjacent days. So this option will also not be considered. अब ये T और X प्रिंट हो रहे हैं और ये X और T साथ साथ प्रिंट हो रहे हैं. So let's talk about option C and D only. C को देखें, वो कहते हैं कि T must be printed P must be printed before S is printed. Here P is printed on the last day. So ये वाली जो option थी हमारी, ये वाली जो condition थी, that is not fulfilled in D. So the right option, the right schedule for these jobs can only be option Charlie. So इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि how we can actually figure out very easily applying those basic conditions कि किस तरह हमारी option correct बनेगी. आए कुछ और examples भी इसी के सिनेरियो के हवाले से देखते हैं. Any of the following could be printed on such a day except, अब ऑप्शंस क्या हैं? Now any of the following could be printed on Saturday except one thing. वो कौन सी चीज़ हो सकती है जो सैटरडे को प्रिंट नहीं हो सकती? अच्छा, अब हमने ये कहा था कि P must be printed sometime before S is printed. So if P is printed on Saturday, just like in that case, ये ऑप्शन क्या होगी? This condition will be violated, and once it is violated, our option will not hold true. So our right option in this MCQ is definitely option alpha, that P cannot be printed on Saturday. इसके अलावा तो बाकी सारी हमारी ऑप्शंस सही हो सकती हैं. मतलब T को अगर हम सैटरडे पे करेंगे तो X इसके साथ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. Q की तो वैसे ही कोई मसला हमारे पास Q की कोई कंडीशन है ही नहीं. एंड S is also, although it is a condition here, but it does not basically hold us from putting S on the highest number on the last day, because it is evident क्योंकि S अगर ये है भी तो P तो इससे पहले गुजर जाएगा. So this condition will be satisfied. So this is the only thing that cannot be done on Saturday. P cannot be printed on Saturday, because if we do so तो हम अपनी ये basic condition जो है इसको क्या करेंगे? Violate कर देंगे. Let's move to another question. Third question, that is,
if Q is printed on Wednesday, which of the following could be true? Now, there is a difference between this question and the question we attempted in the last chunk, because in that last chunk we were discussing about a thing that must hold true. Here we are discussing about an option that could be true. So in दोनों में difference है. Must true, I have already explained in the last chunk कि must true का मतलब है कि if we do not follow that, our conditions will not be satisfied. So इन दोनों में बुनियादी एक difference है, एक core difference दोनों में मौजूद है. So let's see options हमारे पास क्या हैं. P is printed on Tuesday. S is printed on Monday. Charlie S is printed on Friday. Delta T is printed on Monday, and eta X is printed on Thursday. So now let's evaluate the options कि कैसे हम इनको देख सकते हैं. Say the first one is if Q is printed on Wednesday. So पहले तो हम ये assume कर रहे हैं कि यहाँ हमने Wednesday को क्या किया, Q for example print कर रहे हैं. Then P is printed on Tuesday. Is it possible? No, it is not possible, because if we print Tuesday, if we print P on Tuesday, we are only left with Monday. ठीक है, ये दोनों slots already occupied हैं, because on Thursday we are already printing W. तो Thursday तो क्या है, already occupied है. And then फिर हमने वो जो करना है कि T और X उसको क्या होना चाहिए, they must be printed on adjacent days. तो वो कहाँ आएंगे, the only slot we are left with is Friday and Saturday. तो हमारे पास spare day बचेगा, वो क्या बचेगा, Monday. So the S, the remaining S, it will be, it has to be printed on Monday. So अगर हम S को Monday को print करेंगे तो ये वाली जो हमारी पहली option है वो क्या होगी, it will be violated, because P has to be printed before S. जबकि यहाँ पर हमारा S कहाँ आ रहा था, it was supposed to be printed on Monday. So ये option तो बिल्कुल भी valid नहीं रहेगी. Then S is printed on Monday. If S is printed on Monday, it is understood it cannot hold true. Why? Because if S is printed on the first day of the week, तो फिर ये option कैसे हमारी correct होगी. ये भी ऊपर यही scenario तो discuss किया, that this option cannot be considered, because if S is printed on the first day of the week, we cannot print P before S. That is our basic condition. तो ये बात भी बिल्कुल भी relevant नहीं रहेगी. S is printed on Friday. If S is printed on Friday, for example, here, for the sake of discussion, I am just putting it, if S is printed on Friday, Thursday is already occupied by W.
and we have already considered that Q is being presented on Wednesday. So we'll have to place T and X. तो T और X के लिए फिर जो alternate days बचेंगे, they will be only Monday or Tuesday. And now where shall we place the remaining P? It has to be placed on the last day of the week, so it will not be printed before S as per our requirement. So S cannot be printed on Friday. ये option भी क्या होगी? गलत consider होगी. Then T is printed on Monday. Yes, that is our right option. कि अगर हम यहाँ Monday को for example T करते हैं, तो here we can print X adjacent days पे आ गए. Wednesday को Q हो गया, Thursday को already W है, and here we will place P, and on Saturday we will place S. So this is our correct option. Option eta जब हम देखते हैं कि X is printed on Thursday, तो ये क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा, because Thursday we are already occupied with W, because W को तो हमने Thursday को ही करना है. So option eta cannot even be considered for a while, कि इसको तो सोचना ही क्या है, मना है, इसलिए कि उस पर ऑलरेडी हमारा दिन occupied है. So hopefully इन सारी एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. Let's discuss another question. If X is printed on Monday, which of the following must be true? Now remember, here we are talking about a necessary condition. Necessary condition क्या है? वो जिसे हर हाल में पूरा होना है. It's not an option, it's a compulsion. इसके बगैर जो है वो बात नहीं बनेगी. आपकी वो basic 3 conditions वो कभी भी fulfill नहीं होंगी. So let's see what are the options we have. P is printed before Q. P is printed before W. Q is printed before S. W is printed before Q, and eta is W is printed before S. Now here we have the options. Just for your convenience, I am writing down the days once again, because that is already occupied. And then we have Saturday. So I have written the days for you. The first thing is, if X is printed on Monday, it is there, and we know that W must be printed on Thursday. So these 2 slots are occupied. अब हम बाकी की slots देखते हैं. P is printed before Q. It is possible or not? Let's check. अब ये X है, तो X के बाद यहाँ तो क्या आना है? यहाँ पर understood है, T आना है, because T and X they must be printed on alternate on consecutive days. इसके अलावा इनके हमारे पास और कोई option नहीं है. Then we can place Q and S.
और यहाँ पर क्या आ सकता है P, but it can go vice versa. Here we can place Q and here we can place P. तो हमारी बेसिक कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी बिकॉज द कंडीशन वाज दैट P मस्ट बी प्रिंटेड बिफोर S. So it can be an option but it is not a compulsion. That is where the difference lies. लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया उसमें ऑप्शनल चीज़ें थी, इसमें क्या है कंपल्सरी है. So this can be an option but this is not a compulsion. नेसेसरी कंडीशन नहीं है, so it will not be considered. P is printed before W. We have just seen that P, it can be printed before W or it can be printed after W. So beta is also not the right option. Reason बता दी already. Third option देखते हैं. If Q is printed before S, it can be a correct option or it cannot be because दोनों ही हमारे पास viable options हैं. अगर हम P को यहाँ प्लेस कर दें, S यहाँ प्लेस करें और Q इधर प्लेस कर दें तो it is okay because all three conditions are fulfilled. P जो है वो S से पहले हो रहा है और ये वाली जो ऑप्शन है Q is printed before S, ये ऑप्शन भी क्या है, इसके बगैर भी हमारी सारी की सारी कंडीशंस क्या है, फुलफिल हो रही हैं. सो इट कैन बी एन ऑप्शन बट इट इज नॉट अ मस्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, W इज प्रिंटेड बिफोर Q. हम देख चुके कि इट इज ऑल्सो नॉट अ कंपल्सरी थिंग टू हैव. हमने Q यहाँ रख के भी देख लिया और W के बाद भी रख के देख लिया. So this is also not a compulsion, not the correct option for us. And W is printed before S. Yes, that is the right option because ये चीज़ कभी भी violate नहीं हो सकती. Because after like putting X and T here on Monday and Tuesday, we had one blank day, that is Wednesday. On Thursday we had W. Now if we do not do so, अगर हम W जो है if we do not print it before S और S को हम यहाँ लगा देते हैं तो फिर S will be printed before P, which is not according to the prescribed conditions. So the right option for us that must hold true in every case is option eta. होपफुली इन सारे सिनारियो से आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन एंड व्हाट इज द ऑप्शनल कंडीशन और किस तरह इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हुए आपने अपनी करेक्ट ऑप्शन मार्क करनी है. होपफुली जी आपको लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा एंड यू वुड हैव लर्नड व्हाट वाज नीडेड ऑफ यू. In case there is any question, there is any query, do ask me using that comment box and clear all the confusions you may have. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें. अल्लाह हाफ़िज़.